आगच्छन्तु 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 लघु नाटकं पश्यन्तु। भवतां सर्वेषां सम्मुखे जिएलए विश्वविद्यालयतः अस्माभिः प्रस्तूयते एकं लघु नाटकम्। नाटकं किं नाटकं रे किं नाटकं? संस्कृतस्य नाटकं संस्कृतस्य नाटकं संस्कृतस्य नाटकं पश्यामः। Look, have you looked this new India? This is all my doing, all are my doing. This alcohol, these fights, these quarrels, all are my doing. All are my doing, this my college doing. I sent a letter in 1835 to the British. Where is it? Oh, it's here, I found it, yeah. According to me, a single shelf of a good European library was worth the whole literature of India and Arabia. I want a class of people. I want a class of people who is Indian in blood and color, but English by opinion, by intellect, and by morals. So look, that's what's happening. That's what's happening now. I have finished your Sanskrit in India. And see? All speaks English. All speaks English. Does anyone know Sanskrit? You? You? No one speaks Sanskrit. If you were truly Indian, then you would have a knowledge of Sanskrit. But you don't. I want this thing from the very first time that by adopting the British education system, you will insult your own culture, your own civilization, your own religion, your own beliefs. It doesn't matter. It doesn't matter if we have left this India in 1947, but you are still our slaves. You still our slaves by the mind. हरि ओम कहा उक्तवान् भवन्तः यत् भारतदेशे कोऽपि संस्कृतं न जानाति। Nonsense. भारतदेशे अहं संस्कृतं जानामि, अहं संस्कृतं वदामि। भवान् किं चिन्तयति? वयं भारतीय दुर्बलाः स्मः वा? वयं भारतीय सबलाः स्मः। वयं भारतीय सर्वानां संस्कृतीनां सम्मानं कुर्मः। संस्कृत ग्रन्थेषु अपि लिखति स्म यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः। अत्र न केवलं भारतीय अपितु ये पृथिव्यां निवसन्ति सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु। वयं सर्वानां भाषाणां पाठनं कुर्मः येन अहं तासु भाषासु एव प्रत्युत्तरं दातुं शक्नुमः। भवान् किं चिन्तयति? वयं भारतीय दुर्बलाः स्मः वा? Okay, if you this Sanskrit, tell me some benefits of it. केवलम एकः लाभः? अहं 10 लाभान् वदामि। ये जो अभी आपने लुक बोला ना, इसमें जो ला है उसका उच्चारण स्थान है दंत। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी में प्रत्येक अक्षर के उच्चारण के लिए एक अलग से सूत्र दिया हुआ है, जैसे कि लृदलसानां दन्तः, अर्थात ल का उच्चारण स्थान है दंत। उपपद मानीय नाम ओष्ठौ, अर्थात प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठः, ऋतूर्षाणां मूर्धाः। इसीलिए संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। स्पष्टं वा? आपका घर तो होगा ना? Yes. कैसा है आपका घर? Yeah, it's too good. It's too large. Huh? किसने बनाया आपका घर? Yeah, by my architect. आपने इनका घर बनाने के लिए क्या तरकीब अपनाई? Well, I'll explain. I have used the technique of the Vastu Shastra, an ancient Indian architectural system that harmonizes the building's layout with the universal directional alignments. उत्तमम, शोभनम। So, you have read Vastushastra before, make ready my home. Yes, my lord. After showing you so many houses that didn't meet your needs,
when I presented the designs based on Vastu Shastra, you were highly impressed by how the ancient system aligns architecture with universal ideas, and you chose those designs immediately. So you also read Sanskrit, huh? Yes, sir. Aham Sanskritam vadami. अहम संस्कृतम वदामि, अहम संस्कृतम वदामि। देखा, अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इति एव संस्कृतस्य लाभः। अच्छा, बीमार होने पर अपना इलाज तो कराते होंगे ना? कैसे कराते हो वो इलाज और किससे कराते हो? Yeah, there's my family doctor. आप इनका इलाज करने से पहले क्या करते हो? Yes, being his personal physician, I have integrated the wisdom of traditional Indian texts such as the celebrated Bhagavad Gita into my clinical practices over the years. This approach allows me to evaluate my patients more comprehensively by understanding both their physical and psychological. मुक्ति अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। यह सिर्फ संस्कृत में ही क्यों है? क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है, संस्कृत हमारी देव भाषा है, यह हमारी संस्कृति है। भारत में रहकर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम इंग्लिश या कोई अन्य भाषा बोलते हैं। भारत में रहकर मुझे संस्कृत आती है, मुझे इस बात का गर्व है। इत्युक्ते अहम संस्कृतम वदामि। अहम संस्कृतम वदामि। Aham Sanskritam vadami. अहम संस्कृतम वदामि। Aham Sanskritam vadami. अहम संस्कृतम वदामि। Aham Sanskritam vadami. अहम संस्कृतम वदामि। अहं संस्कृतं वदामि। Aham Sanskritam vadami. अहं संस्कृतं वदामि। अब आप सभी हमारे साथ एक एक करके बोलिए। अहम संस्कृतम वदामि। अब सभी लोग मिलकर एक साथ बोलेंगे। अहम संस्कृतम वदामि। अहम संस्कृतम वदामि। अहम संस्कृतम वदामि। Aham Sanskritam vadami, aham Sanskritam vadami. ओहो एषा अपि वदति। अब हम बोलेंगे जयतु संस्कृतम और आप सभी बोलिएगा जयतु भारतम। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।